मीडियम रॉबिन्स चैप्टर नंबर 1। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, अगर हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो उन सेल्स के बीच में एक लिक्विड जेली लाइक मटेरियल मौजूद है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी ये सेल के बाहर का मैट्रिक्स है। द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसके लिए अब पूरी वीडियो में मैं होपफुली बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, is a network of interstitial proteins that constitutes a significant proportion of any tissue। यानी अगर आप स्टमक की बात करो तो स्टमक में भी क्या होगा, देयर विल बी सेल्स और सेल्स के बीच में ECM। अगर आप हार्ट की बात करो तो हार्ट के सेल्स होंगे, उनके बीच में ECM। सो ECM इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एनी सेलुलर टिश्यू। सो जो भी टिश्यू आपकी बॉडी में मौजूद है वो चूंकि सेल से मिलकर बना है, उन सेल्स के बीच में दिस इज द मैट्रिक्स विच इज प्रेजेंट। और ये जो मैट्रिक्स है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। इट इज नॉट जस्ट सिंपल लिक्विड, इसमें प्रोटीन्स हैं, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, और जो सेल इंटरेक्शन है विद द ECM इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर डेवलपमेंट एंड हीलिंग एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल टिश्यू आर्किटेक्चर। जिसका मतलब ये है इस लाइन का कि सेल्स के बीच में ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मौजूद है, इट इज नॉट मेयरली अ फ्लूइड व्हिच इज नॉट परफॉर्मिंग एनी फंक्शन। ऐसा नहीं है, सेल्स रूटीनली इस ECM के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी है सेल सर्वाइवल के लिए। और जो भी इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो रहा है या हीलिंग का प्रोसेस हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज kind of a very functional liquid present between the cells, so it is doing some job, okay? Also, जब हम कैंसर की बात करते हैं, so कैंसर के progression में changes in the extracellular matrix are very very important. So this is a very important intervening tissue type of thing. It's not a mere liquid not doing anything, it's a functional liquid between the cells, okay? So much more than a simple space filler. It's not merely a space filler, सिर्फ ये जगह नहीं भर रहा सेल के बीच में, it is actually performing functions. So for example, पहला function यहाँ लिखा है, it provides mechanical support for cells। तो cells को ये mechanical support provide करता है for their migration as well, because many cells move in your body। They also control the ECM, it controls cell proliferation। Now that may be surprising for you कि आप समझ रहे होंगे यार ये लिक्विड है, ये कैसे कंट्रोल करता है, बट इसमें सिग्नलिंग हो रही होती है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रिसेप्टर्स फॉर प्रोटीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ECM। सो ECM के अंदर काफी प्रोटीन्स हैं, सेल्स पे उनके रिसेप्टर्स हैं, ओके? द ECM प्रोवाइड्स अ डेपोट, और किस चीज के डेपोट? फॉर अ वैरायटी ऑफ लेटेंट ग्रोथ फैक्टर्स दैट कैन बी एक्टिवेटेड विद इन अ फोकस ऑफ इंजुरी। सो ग्रोथ फैक्टर्स का डिस्कशन वी डिस्कस 8 टाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स इन द प्रीवियस वीडियो। इसी चैप्टर में हमने डिस्कस किए हैं। फॉर एग्जांपल EGF की हमने बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट सो मेनी प्लेटलेट ड्राइड ग्रोथ फैक्टर, VEGF। सो 8 मैंने आपको ग्रोथ फैक्टर्स बताए थे। Those growth factors are present within the extracellular matrix, सेल के बीच में ये पड़े होते हैं। So it's an important reservoir for growth factors। Then इसके folding of the tissue renewal। So जब कभी there is tissue injury या कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, या whatever रीजन की वजह से कोई टिश्यू इंजरी है, दिस एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोवाइड द बेसिक बेसलाइन मटेरियल फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टिश्यू माइक्रो एनवायरनमेंट। सो एक सेल दूसरा सेल, इसके यहाँ जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स दरमियान में होगा, that will have a specific composition of ions, it will have a specific composition of proteins, so that's very important, and this is what we call the tissue microenvironment, and it is very important, okay? And the basement membrane acts as the boundary between the epithelium and the underlying connective tissue. It does not just provide support to the epithelium, but it's also very very functional. For example, in kidney, forming part of the filtration apparatus. So अब तक जितने मैंने आपको फंक्शंस बताए, एक चीज जो मैं एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि अगर कोई ये समझता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सिर्फ एक फिलिंग टाइप ऑफ मटेरियल है जो सेल्स के बीच में है, और सिर्फ एक एनाटॉमिकल या हिस्टोलॉजिकल एंटिटी है जो कोई काम नहीं कर रही, तो आप गलत सोचते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी मच फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ अ टिश्यू, ओके? द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इज कॉन्स्टेंटली बीइंग रीमॉडल्ड, यानी इसकी जो प्रोटीन कॉम्पोजिशन है, इसकी आयोनिक कॉम्पोजिशन, वो चेंज होती रहती है। Its synthesis and degradation accompany morphogenesis, tissue regeneration and repair, chronic fibrosis, tumor invasion and metastasis। सेल्स को जब कभी ये सब काम करने होते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की सारी कॉम्पोजिशन चेंज होती है। ECM occurs in two basic forms. Number one is interstitial extracellular matrix and the basement membrane. So basement membrane is also a part of ECM. Okay? Interstitial matrix का मतलब क्या है? It is present in the spaces between the cells. So एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो लिक्विड है, that is what we call the interstitial matrix.
The interstitial matrix is synthesized by mesenchymal cells, जो यहाँ spaces में होते हैं. Primarily fibroblast से ये extracellular matrix बनता है. And there are so many other proteins as well, such as collagen, such as fibronectin, elastin, proteoglycans, hyaluronate, and other constituents as well. अभी देखते हैं थोड़ी देर में. Another type of ECM is the basement membrane. This seemingly random array of interstitial matrices in the connective tissue becomes highly organized and around the epithelial cells or the endothelial cells, and it forms the basement membrane. ये नाम आपने कई दफा histology में सुना है. It is synthesized conjointly by the overlying epithelium as well as the underlying mesenchymal cells, and it forms a flat lamellar chicken wire mesh type of stuff. Primarily, it contains a lot of type 4 collagen. So, if you look at the diagram here, these are the epithelial cells. ये किसी भी tissue के हो सकते हैं. Say, for example, we are talking about stomach. तो ये epithelial tissue हो सकता है. And now, from the epithelial, कुछ प्रोटीन रिलीज होते हैं, एंड फ्रॉम द मेसेनकाइमल सेल, जो फाइब्रोब्लास्ट है, इससे कुछ प्रोटीन रिलीज होता है, और इन तमाम प्रोटीन से ये एक मैश वर्क टाइप ऑफ कंडेंसेशन टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बन जाता है, जो कि एक्चुअली इन एपिथेलियल सेल्स को भी सपोर्ट कर रहा है और इस सेल की आर्किटेक्चर को डिफरेंशिएट कर रहा है फ्रॉम दी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. तो इस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि प्राइमरीली टाइप 4 कोलेजन से बनती है, बट आल्सो कंटेन्स लैमिनिन, प्रोटीओग्लाइकन, अदर थिंग्स. सो इट इज प्रेजेंट व्हेनेवर देयर इज अ सेलुलर लेयर एंड ऑन द अदर साइड इज द इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स. तो यहाँ पे कोई एक नेक मेम्ब्रेन होगी जो इनको सेपरेट करेगी. सो ये देख रहे हैं आप, एपिथेलियल सेल्स हैं और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है. इसी तरह ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल के ये वाले सेल जो हैं, दीज विल बी द एंडोथेलियल सेल. ये अब एपिथेलियल सेल नहीं है. तो एंडोथेलियल सेल के बाहर भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होगी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से इसको सेपरेट करेगी. सो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वेर एवर यू हैव सेल्स इन द बॉडी. ओके, और मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स बताइए, तो बड़ा परेशान होते हैं. इसका सिंपल आंसर है, वन इज नोन एज इंटरस्टिशियल, दिस इज मोर रादर लिक्विड, and the other one is the basement membrane. So basement membrane is basically a component of extracellular matrix. Okay, अब ये जो interstitial fluid है, it is largely synthesized by the mesenchymal cells such as the fibroblast. लेकिन जो basement membrane है, it is synthesized by the mesenchymal cells as well as the epithelial cells. So that's the beauty. Okay, right. So what else do I need to tell you about the extracellular matrix? कि हम जो इतनी बात कर रहे हैं कि ये बड़ा functional चीज है, ये किन किन चीजों से मिलके बनता है. So what are the components of extracellular matrix? So in this diagram, for example, they have shown you a cell and then the extracellular component. Okay, अब हम देखते हैं क्या क्या composition है. So the components of extracellular matrix fall into three wide groups. पहला ग्रुप है, number 1, fibrous structural proteins. So पहली जो चीज मौजूद है extracellular matrix में, वो है proteins, और इनकी main typical examples हैं collagen, elastin, and so many others. The second important component of the extracellular matrix is water-hydrated gel-like substances, such as proteoglycans, such as hyaluronan, such as these proteins plus carbohydrate structures. इनका काम है to provide compressive resistance. का मतलब ये है कि अगर एक सेल यहाँ है और दूसरा सेल यहाँ है, इसके बीच में ये जो molecules हैं, water-hydrated gels, ये cells को आपस में पिचकने से, दबने से रोकते हैं. And they also provide lubrication on the cellular surfaces. और तीसरा जो important group है extracellular matrix में, वो है adhesive glycoproteins का, और इनका काम है to connect the extracellular matrix to one another and also to the cells. So if you look at the diagram, for example, here you will see that these fibronectin, these are the molecules which are connecting the extracellular matrix component with the cellular receptors. Okay, and then there are structural proteins such as collagen. Fibronectin is binding substance, and if we go back to this particular diagram, it will show you that what are the different components of extracellular matrix. So there are structural fibers such as collagen. Then there are some proteoglycans. You see here heparin sulfate, proteoglycan matrix in the extracellular component. So it is kind of binding various receptors and the matrix to the cells and the cells to the matrix. So ये सारे proteins मौजूद हैं. Okay. Now the point is कि ये तीनों components आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि extracellular matrix में सिर्फ protein नहीं होती, सिर्फ liquid नहीं होता, सिर्फ ions नहीं होते. In fact जो matrix की हम बात करते हैं, it is composed of three basic structures.
और वो 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं. नंबर 1 प्रोटीन्स, नंबर 2 वाटर हाइड्रेटेड जेल लाइक सब्सटेंसेस एंड नंबर 3 एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन जो चीजों को आपस में जोड़ते हैं. ओके, अब वन बाय वन की थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं कि जो कोलेजन्स हैं, जो पहला कंपोनेंट है, they are composed of 3 separate polypeptide chains into a rope-like triple helix. About 30 collagen types have been identified, or some of them form linear fibrils such as type 1, type 2, 3 and 5, and they are stabilized by interchain hydrogen bonding such as fibrillar collagen. So this is too much detail, but if you can remember, that will be fine. The tensile strength of the fibrillar collagen derives from the lateral cross-linking of the triple helices by covalent bonds, an unusual post-translational modification that required hydroxylation of lysine residue. So ये सारा सेल के अंदर हो रहा होता है. Because lysyl oxidase is a vitamin C dependent enzyme, अगर vitamin C deficiency होगी, then there will be weak collagen, and that may lead to so many problems such as scurvy, जिसके अंदर bleeding gums होते हैं because collagen नहीं होता, osteogenesis imperfecta, जिसमें bones की growth ठीक नहीं होती. Okay, and also some complicated syndromes such as Ehlers-Danlos syndrome. So इन सब में hydroxylation का जो process है वो नहीं होता, जिसकी वजह से जो collagen बनता है वो mature collagen नहीं होता और वो weak collagen होता है. Okay, then there are non-fibrillar collagens. Various contribute to the structure of the planar basement membrane such as type 4 collagen, and they help in regulating collagen fibril diameter or collagen interaction, so called the fibril associated. So basically ये basement membrane का component है which are non-fibrillar. So fibrillar is purely a structural thing. अगर triple helix fibril मौजूद है, then they are more providing structural strength, and if they are non-fibrillar, they are rather part of the basement membrane. Okay, another protein which is a component of the extracellular matrix is elastin, and the ability of the tissue to recoil and recover their shape is dependent on elastin. So lungs में काफी सारा, for example, elastin होता है. It is especially important in cardiac valves, large blood vessels which accumulate a lot of pulsatile movement. Blood उसमें से गुजर रहा है तो pulsations हो रही हैं vessels में. Uterus आपको पता है इतना important, इसमें भी पूरा develop करता है, दोबारा अपनी shape में आ जाती है. Skin, also ligaments, they all contain a lot of elastic tissue, elastin protein. And morphologically, elastic fibers consist of central core of elastin associated mesh-work. This is not important. The later relationship partially explains why fibrillin defects leads to skeletal abnormalities and weakened aortic valves. अगर elastin में problem है तो वो तमाम structures जिसमें elastin मौजूद है वहाँ problem होगा. And that is seen in Marfan syndrome, for example. Okay? तो ये पहला कंपोनेंट था जो किसी भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होता है, एंड दिस इज व्हाट आई कॉल द प्रोटीन कंपोनेंट. ठीक है, अब प्रोटीन कंपोनेंट में 2 प्रोटीन्स आपने याद रखनी है लाजमी तौर पे, कोलेजन्स एंड इलास्टिन्स. नाउ वी टॉक अबाउट द प्रोटियोग्लाइकेंस, द सेकंड कंपोनेंट, एंड हाइलुरोन. These form highly hydrated gels that confer resistance to compressive forces. तो इनका बेसिकली काम है जो कंप्रेशन है सेल्स को जो पिचका सकता है, उस पिचकने से सेल को रोकना. Proteoglycans consist of long polysaccharides called glycosaminoglycans attached to core of the protein. Carbohydrate और protein का combination है ये. So it contains amino groups as well as carbohydrate groups. And the highly negative charge, densely packed sulfated sugars attract mostly sodium and abundant water molecule, producing viscous jelly-like material. Okay, that's why they are called hydrated gels. Besides providing compressibility to tissues, resistance to compressibility basically, proteoglycans also serve as a reservoir for growth factors. So many of the growth factors are stored in this area. Then we have adhesive glycoprotein. So that is the third category. If you remember the general classification, then we have the adhesive glycoprotein. इनका काम है चीजों को आपस में adhere करना, चिपका के रखना. These are structurally very diverse molecules, variously involved in cell extracellular matrix and extracellular extramatrix interaction. So एक सेल है वो दूसरे सेल के साथ बात करेगा इन प्रोटीन्स के जरिए, एक सेल है वो अपने extracellular matrix के साथ interact करेगा इन प्रोटीन्स के जरिए, और extracellular matrix का एक component अपने ही extracellular matrix के दूसरे component के साथ interact करेगा. ये interaction काम है इन adhesive glycoproteins का. Okay, that's an important information. और इनकी कई सारी एग्जाम्पल्स हैं इंक्लूडिंग इंटीग्रीन्स, लेमिनेन्स, सेल एडहेजन मॉलिक्यूल्स, बड़े इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये. सो फिब्रोनिक्टिन फॉर एग्जाम्पल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडहेसिव प्रोटीन. इट्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, disulfide linked heterodimer, exists in the tissue and plasma form.
It is synthesized by a variety of cells such as fibroblasts, such as endothelium, monocytes, and fibronectin has specific domains that bind to distinct extracellular matrix component such as proteoglycan, heparin, fibrin, as well as integrins. अब ये wound healing tissue and plasma fibronectin provide scaffold for subsequent ECM deposition. So fibronectin is a very important adhesive protein जो मुख्तलिफ proteins के साथ bind करता है such as heparin, fibrin, collagen, proteoglycans, and it helps in providing a meshwork structure जिसके ऊपर पूरा ECM regenerate होता है during the process of wound healing. Laminin is another example of tissue adhesive protein. It is very abundant, a very large protein molecule. It interacts with type 4 collagen and heparin sulfate in the basement membrane. Besides mediating the attachment to the basement membrane, laminin also can modulate cell proliferation. So ये भी इसका important काम है, also cell motility and differentiation. Another example of a cell adhesion molecule is integrin. They are large family of transmembrane heterodimeric glycoproteins composed of alpha and beta subunits. So transmembrane, membrane से आर पार गुजर रहे हैं. And they can attach different components such as laminin, fibronectin. So इनका काम ही है different components के साथ attach होना. Integrins also mediate cell-cell adhesive interaction. For instance, integrins on the surface of the leukocyte are extremely important in mediating fermentation and transmission across the endothelium during the sites of inflammation. So inflammation में what happens कि if this is the blood vessel, तो यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स हैं और ये कोई से फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल है. सो इनमें जो इंट्रीगिन्स हैं वो एंडोथेलियल रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और फिर ये न्यूट्रोफिल माइग्रेशन करके कीमोटैक्सिस करके इट रीचेस टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन. तो ये इंटरेक्शन बिटवीन दीज एडहेसिव प्रोटीन्स एंड वेरियस स्ट्रक्चर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मूवमेंट ऑफ द सेल. ओके, इंटीग्रिन्स अटैच टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स component via a tripeptide, arginine, glycine, aspartic acid, motif. Not important, I would say, but if you can remember, up to you. In addition to providing focal attachment to the underlying tissue substrates, binding through integrin receptor can also trigger signaling cascades. So once there is a cell और उस पर integrin bind करता है किसी receptor के साथ, it can initiate intracellular signaling, which means cell के अंदर बनने वाली proteins को ये control करेगा. So the point is that what we have been talking about is the extracellular matrix. आपको इसमें याद रखना है कि there are 3-4 components of extracellular matrix और वो 3 components में number 1 पे है proteins, number 2 पे है hydrated gels and number 3 पे है adhesive glycoproteins. और इनके आपने देखा कितने important काम है. They help in stability of the tissue microenvironment. They help in movement of the cell. They help in cell to cell talk. They help in cell to extracellular matrix talk. And if they go crazy, then tumor formation can also happen. So these are all different protein molecules and different components of the extracellular matrix that you have to remember. Okay, so these structures are not super important. Exam में ये इतना ज़्यादा नहीं पूछे जाते, but the general idea which I just gave you is very important. You should know what are the examples of each particular type of extracellular matrix component, and then you should be able to at least telling कि कौन सी प्रोटीन क्या काम करती है. ओके, सो दैट्स ऑल. आई एम एंडिंग दिस कॉन्सेप्ट हियर. नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1, व्हिच इज मेंटेनिंग द सेल पॉपुलेशन या सेल साइकिल. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और हम सेल साइकिल को डिटेल में डिस्कस करेंगे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.